now. Thank you so much, ma'am. My screen is visible, right? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Good morning, everybody, and welcome to this session. So I hope so. Whatever we have learned till date, everybody completed that. Any question? Any question regarding that? If you have, then you can raise the query. Okay. So I'm going to start today. Yesterday, we gave you the understanding. Okay, let me start the like where I note down the functions, whatever we covered. Okay. So these are the functions which we covered till date, like almost we are learning from the day before yesterday. And we covered at the end, we covered the replace function. Anything else you want to ask, like while doing the practice, you are find some problem, then you can raise the query. Otherwise, I'm moving ahead because today I'm going to start the date category. Okay. Is there any query? Anybody tried? Anybody tried? Okay, just wait for the 2 or 3 minutes. Good morning. Good morning. You tried, Akanksha? I think so. Yesterday you were there in the class. Yeah, right. Wait for the 2 3 minutes. I'm sure like so many attendees are there who want to join. Okay. Concatenate. Okay, okay. I'll repeat. Okay, I'll repeat. Okay. One question I got, that is concatenate. Anybody have some another question? Okay, so let's start. Concatenate. Repeat replace function. Okay.
See, this is our data. Okay. Now, concatenate means what? As the name suggests, concatenate. Concatenate means to add the some values. See, we can add the numeric values also, but for that we have the numeric operator, that is plus sign. Okay, and then also we have the sum function. Yesterday we have seen when we want to add something like in the numeric figures. So sum function is also there, plus operator is also there. But concatenate means when you add some, you want to add some text. Okay, text or alphanumeric things. For example, suppose here, okay, here I am going to add one. Here, I want ID and name. So is equal to concatenate and go to the global superstore. First, I want this, then comma. Don't press a dollar sign because I want to like so many customer ID and names now. Then in space, just add the space and just add the name. Bracket close, press enter. See, now you can drag it. Is it clear? This is the concatenate. Instead of that, you can use is equal to this and. And is an operator which is used for, which is known as a concatenation operator, concatenator. Okay, inverted comma, then and, again name. See, both are the same thing now. Yesterday I gave you the understanding, both are the same thing. This is easy. Why this is easy? Because Excel को ज्यादा effort लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. But in that case, the function is there. Okay, so function takes some more memory, but it will not. So that's why this is the suggestion is you should use the AND operator. Is it clear? Is it clear? Student who asked for the concatenate, is it clear? Should I move ahead? Yeah, combination, we will do the combination now. Okay. Now the next the question is replace function. Somebody wants ki ma'am replace function bhi bata dijiye, what is it? For example, suppose here is pen number. Okay. Okay, here is a pen number. Now from this pen number, I want the fourth character should be replaced by C. The fourth character should be replaced by C. Okay, so there is an option, two options are there. One is substitute. But what substitute does? Suppose here is also the P. Okay, here is also the P. Here is also the P. What substitute does? Is equal to substitute. Substitute doesn't ask about the position. Only it will replace P, and P should be replaced with C. Now our motto was it should replace the fourth character. Okay, so you should use the replace function. Replace is equal to replace, because you know na the fourth position you want to replace. So in this text, you want the fourth position should be replaced. And how many characters replace? Only one. And what you want to insert? C. Then enter. See, now your motto, now whatever you want, the replace function will do for you. Both the functions are almost like, it seems it's similar. But replace and substitute, the difference is replace as the position. Is it clear? Is it clear? Okay, now next. Now today we are going to check the, first we will see the date category and then we will see the combination of functions, how we can use the combination of functions. Okay, now date category.
Date, as the name suggests, date category. Definitely, see, we learn the maths category, है ना? And then in the maths category, some in maths, but see, under the maths category, the whatever the functions are there, they all work with the numeric figures. They all work with the numeric figures. And text category, whatever the function in the text category, they will all work with the text, right? A string or connection of character. Now, today we are going to learn the date category. So definitely, as the name suggests, date category will work with the dates. Okay, but before like moving ahead, before we start the date category, one thing you should know, suppose you are having one date, control semicolon is a shortcut key to insert the current date. And whenever you insert the date, whatever the date is there, no matter it is a current date, whenever you insert a date, then it will take the right alignment. Okay, it will take the right alignment. And now the problem is, suppose you are entering this date. Tell me, this is the correct date. But suppose I am entering this date. Then it is not taking the right alignment. Why so? The reason should be clear, because see, if you want to work with the Excel in a expertise way, then you should know the basics things. You should know the basic things. You know, Excel always accept the dates greater than equal to 1/1900. It doesn't recognize the date below the 1900. See, this is the date which is below the 1900. Is it clear? वो क्या मैंने बोला ये समझ आया आपको? Please answer me. Answer me. Is it clear what I told you? Try to understand. No? No? Okay. See, dates category, we are going to start the date categories. And as the name suggests, date category will work with the dates. है ना? Dates के साथ ये काम करेगा. But before starting the dates category, you should know, in a Excel, suppose you are entering the correct date. Correct date. So it will automatically takes the right alignment. Okay, ये अपने आप right alignment ले लेते हैं. But if you are entering this date, but as you can see, like this date is a correct. ये date correct है. But Excel इसको right alignment नहीं कर रहा. What is the reason? Because this is a machine now. So machine work on the coding, whatever the coding here it is. तो एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो डेट है वो हम हमेशा ये एक्सेप्ट किसको करता है? 1 जनवरी 1900 से आगे की डेट्स को, पीछे की डेट्स को ये नहीं समझता है. आर यू गेटिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड और से यस और नो. Excel doesn't understand the date below the 1900. That's it. You should make this word important. Okay, so if the date is correct, like this date is correct,
Okay, so when you drag it, because this takes the right alignment, when you drag it, you will get a mini toolbar. देखो आपको ऐसा toolbar मिलता है. Now from here you can select fill days, you can select fill weekdays, you can select fill years. Is it? You can select fill months. Okay, but if the date is not correct according to the Excel, as per me this is correct, but according to the Excel this is not correct. So when you drag it, then it will not give you the mini toolbar completely. Date wala toolbar nahi aayega. Only it is giving me the option fill series. That's it. Now it is clear. Nitin, everybody please. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Everybody is replying. Okay, thank you so much. Okay. Okay, now next. Now, suppose you enter here one, okay, and you set it in a date format. So what is it? 1 January 19. Because in a Excel, the date starts from 1st January 19. Suppose you enter here the 20 and you convert it into the date. You convert it into the date. Then 20th January 19. Is it? So, कई बार क्या होता है ना, we want random dates. मैंने कल आपको rand between function पढ़ाया था. We want random dates. So, अगर मैं आज की डेट को नंबर में कन्वर्ट करती हूँ तो कितने दिन आते हैं? देखो कितने दिन आते हैं. 1 जनवरी 1900 से इतने दिन हो चुके हैं. अब मुझे क्या चाहिए? 2025 के रैंडम डेज चाहिए, डेट चाहिए. तो रैंड बिटवीन यूज कर सकती हूँ ना मैं. इसके आप 100 पीछे चले जाइए. 45 700. ओके, 45 700 650 ले लेते हैं. मामा 45 7 और इसको खींच लीजिए. सो यू विल गेट द रैंडम डेट्स ना. देखो रैंडम डेट्स आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये समझ आया? बिकॉज इन अ डेट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो. ये चीजें समझना बहुत जरूरी है. इज इट क्लियर? कैसे रैंडम डेट्स निकाली मैंने, वो समझ आया? ओके, सो should I move for the next? Okay, thank you Dipankar, thank you for the replying everybody. Now next. Now the functions of dates are, सबसे पहले हम यहाँ पे पहले फंक्शंस देख लेते हैं ना. कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? इज इक्वल टू डे, देन डेट, इज इक्वल टू मंथ, देन डेट, इज इक्वल टू टुडे करंट डेट के लिए, इज इक्वल टू नाउ करंट डेट और टाइम दोनों के लिए. ठीक है, और फॉर्मेट सेट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा. इज इक्वल टू ईयर. अब पहले ये देख लेते हैं चारों फंक्शंस. अब देखिए, सपोज आई वांट करंट डेट. मुझे आज की डेट चाहिए है ना, करंट डेट. तो दो तरीके हैं करंट डेट के. इज इक्वल टू टुडे है ना, ये तो फंक्शन है.
अब आप क्या करिए, कंट्रोल सेमीकोलन यूज करिए. कंट्रोल सेमीकोलन इज अ शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट डेट एंड दिस इज अ फंक्शन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? ये जो डेट है ये कल चेंज हो जाएगी. अगर मैंने मेरी एक्सेल में इसको इंसर्ट कर दिया, सो टुडे इट विल गेट चेंज, but it will not, because here it is a function and here it is not a function. This is the control semicolon. Same thing is time. Is equal to now. अब ये डेट टाइम दोनों दे रहा है. So press control 1 and then set the format. Is it? And you can insert the time with the help of shortcut key also. That is control shift semicolon. अब बोलोगे मैम इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? The difference between these and these is ये अपडेट होगा, ये अपडेट नहीं होगा. Because जैसे ये बताया कि the date will not be changed and here the time will not be changed. But here the time will change. The moment the time, like आपने अगर इसको रिफ्रेश किया तो देखो सेकेंड्स चेंज हो गए ना. ये देखो चेंज हो रहे कि नहीं हो रहा. F9 is a shortcut key for the refresh. Okay, so next. Now अब मेरे पास कॉम्बिनेशन भी साथ में पढ़ाऊंगी, राइट? I want is equal to day of this date. तो क्या आ रहा है? 18 आ रहा है ना. What is 18? आज महीने का 18th डे है. Today is the 18th day of the month. Okay, so is equal to day. अब बीच में डेट देनी है तो आप क्या कर लो, टुडे दे दो ना. Is it? Is it? Now I am having dates. यहाँ पे मेरे पास डेट है ना. तो मैं इसको क्या करती हूँ, is equal to day. Now why this is giving me the value? प्लीज बताओ मुझे. ये सब डेट उल्टी सीधी है, देखो आप, ये डेट सब उल्टी सीधी है. Why? Because my system format is DDMMYY, while the dates are given in the MMDDYY format. अब इसके लिए क्या करें? मेरी जो ये डेट्स हैं, ये डेट्स क्यों उल्टी सीधी हैं, ये क्यों लेफ्ट में जा रही हैं? बिकॉज माय डेट फॉर्मेट इज DDMMYY और इसका फॉर्मेट है MMDDYY. तो ये इस डेट को समझ ही नहीं रहा है. सो इसको सिलेक्ट करके या तो कंट्रोल 1 करके इसको आप क्या करिए, इसका फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, है ना. और चूंकि वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी डली हुई है. तो आप क्या करेंगे, इसको कंट्रोल पैनल में जाइए, गो टू द कंट्रोल पैनल, अपने सिस्टम की डेट का फॉर्मेट चेंज कर दीजिए. रीजन, है ना, रीजन. रीजन में जाते हैं, एडिशनल सेटिंग, देन देयर इज ऑप्शन ऑफ डेट एंड इंस्टेड ऑफ DDMMYY MMDDYY सेट कर दीजिए. अब देखिए आपकी सारी डेट्स करेक्ट हो गई कि नहीं. इसको रिफ्रेश कर लेते हैं. ये देखिए सारी डेट्स अब करेक्ट हो जाएंगी, है ना. एक बार इसको ओपन कर लेते हैं क्लोज करके, ऑटोमेटिकली नाउ आई शुड ओपन.
इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू, यस, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सी, सारी डेट्स हो गई। भी नहीं हो रही है, इसको हम सेट कर दें। दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, और भी तरीके बता देती हूँ। Everything is incorrect. So is equal to, there is a one format, text. This is the function, comma, dd, mm, y. mmddy, because my format is mmddy, y. डेट्स के साथ काम करना, इट्स अ वेरी 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 टिपिकल इन एक्सेल। एक्सेल में क्योंकि डेट्स जो है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इज इट, है ना। और एक और तरीका होता है ना, वो लास्ट तरीका, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग, समझ आ रहा है सबको, है ना। अब दूसरा तरीका बता देती हूँ, देखें दूसरा तरीका क्या है। आप इसको सेवन 18/2025 कर दिया, उसके बाद भी इसने यू नो व्हाई इट इज नॉट टेकिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑब्लिक लगा हुआ है ना, तो आई शुड फर्स्ट कंट्रोल एच, इसको रिप्लेस कर दो किससे, देखिए सारी डेट्स आपकी करेक्ट हो गई। इज इट, कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, और नहीं समझ आया तो फिर से पूछिएगा, बिकॉज सी डेट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर करंट टाइम आई एम गेटिंग नेम एरर। करंट टाइम के लिए नेम एरर क्यों आ रही है, इज इक्वल टू नाउ एंड दो, आपने ऐसे यूज किया होगा, आई एम श्योर। आपने क्या किया होगा, ओके, आई एम आस्किंग टू दोज दैट स्टूडेंट हु इज आस्किंग, आपने क्या किया होगा, यहाँ नाउ लिख के एंटर कर दिया होगा, तो इज इक्वल टू नाउ और दो ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है। ओके, नाउ प्लीज स्टूडेंट रेज द हैंड्स कि आपको ये समझ में आ गया डेट्स मैंने कैसे करेक्ट करी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, प्लीज रेज। क्या ये डेट्स करेक्शन समझ में आया, कैसे डेट करेक्ट किया, बिकॉज सी डेट्स, और हमारे पास जनरली जो डेटा आता है उसमें डेट्स होती हैं। प्लीज, आई अंडरस्टूड, ओके नीलेश, थैंक यू। Do we get the assignment? Not clear. Okay. See, अब मैं इसका शिफ्ट डेट का बता देती हूँ ना। देखो शिफ्ट डेट सारी रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, बिकॉज
they are not taking the right alignment. And though I told you the dates which is correct, that should be the in a right alignment. But यहाँ पे right alignment नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए पहले तो ये कि हमारा ये जो फॉर्मेट है वो तो सही है, MMDDYY, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है. तो आप देखो कहीं इन्होंने ऑब्लिक लगाया है, कहीं इन्होंने डैश लगाया है. तो सबसे पहले तो आप क्या करो, पूरा सिलेक्ट कर लो, Ctrl+H टू रिप्लेस, और उसके बाद ऑब्लिक को रिप्लेस कर दो डैश से, रिप्लेस ऑल, देन सी, देखो ये डेट्स करेक्ट हो गई कि नहीं, है ना. अब जो मैंने कंट्रोल पैनल से सेट करना सिखाया वो क्या था, देखो अभी क्या है, ये MMDDYY है, पर मैं चाहती हूँ कि ये सारी डेट्स जो है DDMMYY पे हो जाए. तो DDMMYY पे हो जाने के लिए मुझे मेरे सिस्टम का फॉर्मेट तो MMDDYY है. फिर से कंट्रोल पैनल में जाती हूँ, देन रीजन में जाइए, इन रीजन में जाने के बाद यहां से एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग में डेट, और डेट में यहाँ पे DDMMYY एंड अप्लाई. ओके, देखो पहली डेट क्या थी, 7/31 थी ना, अब 31/7 होगी. देखो आप, देखो ये देखो, क्योंकि मैंने क्या किया, डेट चेंज कर दी, डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया. इज इट क्लियर? डेट समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मुझे ये जो दो डेट्स है ना, इन दोनों को सिर्फ मैं यहां से उठा के यहां डाल रही हूँ. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए, इस ऑर्डर डेट में कौन सा दिन है, महीने का कौन सा दिन है, तो मैं कैसे निकालूंगी, इज इक्वल टू डे एंड देन, और फिर ऐसा भी लिख सकती हूँ एंड डे, 31st डे. अब डबल क्लिक करो, देखो क्या यूज किया मैंने, कॉम्बिनेशन. क्या किया मैंने, पहले उसका डे निकाला, उसके साथ डे लिख दिया. ओके, फिर यहां निकालती हूँ मंथ, इज इक्वल टू मंथ, और ये डेट ले लो, और फिर एंड मंथ. और ये आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मंथ ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो. ये देखो, है ना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए सही लिख रही हूँ. और ईयर इज इक्वल टू ईयर, देन दिस एंड ईयर्स, एंटर. अब देखो, बताइए कहाँ दिक्कत है, आर यू गेटिंग और नॉट, टेल मी. वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि मैं कल से कॉम्बिनेशन और ये सब पढ़ाऊंगी. एनी क्वेरी प्लीज, एनी क्वेरी. दिव्यांशी क्या बोल रही हैं आप बेटा, फिर से बताओ. आ गया ना समझ में दिव्यांशी. नितिन, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट बेटा, आई एम नॉट गेटिंग. मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप रिपीट करो.
समझ आ गया ना? राजा, थैंक यू सो मच राजा. Nitin, I'm not getting your question, okay? Day is not coming. Nilesh, what you want to say? See, just try this one. डे के लिए ऐसा फंक्शन यूज होता है. ये तो मैंने अपने मन से लिखा है, आप इसको मत यूज करिए, भले आपकी मर्जी है. यू कैन नॉट यूज. Is it? Shall I move ahead? Once again. Okay. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर किसी में वाई वाई है या वाई वाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं. आई गिव यू द लाइक एक फंक्शन बताऊंगी जिससे आप उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हो. ओके. And is an operator to add the value. Concatenate पढ़ाया है ना नीलेश. If you want to concatenate something, then use and. Otherwise, there is no need to use the and. जरूरत ही नहीं है उसकी तो. वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाया कि भाई उसको कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं. इज इट? अब आप इनको तीनों को एक साथ भी निकाल सकते हो. इज इक्वल टू डे, है ना? ये ले लिया. एंड डे, देन एंड मंथ. सारे ऐसे फंक्शन को ऐड भी कर सकते हो. एंड मंथ, देन एंड ईयर. एंड ईयर. ये देखिए आ गया ना. अभी स्पेस नहीं है तो आप स्पेस भी डालिए. ओके. 31st day, 7th month, 2012 year. That's it. This is just an example. There is no mean to use this kind of thing. I'll give you the more understanding. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है कि यूज कर, जबकि ऐसा हम कभी यूज नहीं करेंगे. हम तो और इससे आगे पढ़ेंगे. ओके. चलिए नेक्स्ट. नाउ डे, month, year, today. Now this is completed. Now next function, that is equal to date diff. This is very important function. The first argument is early date, later date, then comma, format. Okay. This will gives you the difference between two dates according to format.
So we have the order date and ship date. Okay, अब मैं ये हटा देती हूँ, है ना. Now we want the difference between order date and ship date. भाई मुझे ये पता करना है कि ship date order date के कितने दिन बाद हुई है. So is equal to डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ship date माइनस order date, है ना. ये तो 0 दिन है, डबल क्लिक किया तो ये सारे दिन आ गए कि नहीं आ गए. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज लाइक द शिप डेट इज आफ्टर. शिप डेट क्या है, ऑर्डर के 62 डेज के बाद में शिप हुआ है. और यहाँ देखिए, क्या ये पॉसिबल है शिप पहले हो जाए और ऑर्डर बाद में मिले? ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, जब हम इस तरह से काम करते हैं ना, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ट्राई टू डू दिस, इसको ऐसे करके देखो. यू विल बी सरप्राइज. कभी ऐसा होता है क्या कि शिप पहले हो जाए और ऑर्डर बाद में हो जाए? ओके, इज इट क्लियर? नाउ आपको, अब ये आपको मंथ में डिफरेंस निकालना है. सो पॉसिबल ही नहीं है. मंथ में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सो मंथ में डिफरेंस निकालने के लिए यू हैव टू यूज द फंक्शन इज इक्वल टू डेट डिफ. अर्ली डेट, पहली कौन सी डेट है? ऑर्डर वाली. सेकेंड दिस वन. देन फॉर्मेट एम, मंथ में डिफरेंस चाहिए. सी, डबल क्लिक करिए. We have to take the order date first because this is early date, comma, this is early date, comma, later date. Enter. Okay, that's why it is giving you the error. See, अब एरर जहां दे रहा है वहां पे जस्टिफाई करो क्यों दे रहा है एरर. And then you can write here the end months. कितने डिफरेंस, कितने महीने का डिफरेंस है? यहाँ 0 महीने का, यहाँ 2 महीने का, यहाँ 1 महीने का. यहाँ एरर है. Why it is there? Just try to understood. समझने की कोशिश करिए प्लीज. या ज्योतिर्मय, इट इज ओनली टू एनालिसिस कि कितने दिन हमने बाद में ऑर्डर शिप किया है. ओके, कितने दिन बाद में ऑर्डर शिप किया है. अब व्हाई दिस इज देयर? बिकॉज डेट डिफ टेक्स 3 आर्गुमेंट. द फर्स्ट इज अ अर्ली डेट.
completed? Okay, so see, date diff takes 3 argument. समझ लो है ना, is equal to date diff. The first is the early date. Early date मतलब पहले वाली डेट है ना. Then later date. Later date. Then comma format. अब ये एरर क्यों दे रहे हैं? Because this is the B10 is a letter date here. यहाँ पे देखो B10 letter date है ना. Rest बाकी सब जगह सही है. This is the early date and this is the later date. So that's why it is giving me the error. Now, if you want कि आपको days में difference चाहिए तो D लिख दो, month में चाहिए तो M लिख दो, years में चाहिए तो Y लिख दो. ठीक है, years में चाहिए तो Y लिख दो. अब अगर मुझे days में चाहिए तो सेम ही आएगा जो वहां आया था. Date diff, early date, comma, later date, comma, inverted comma में D लिख दो. No matter it is capital or small. See? अब फिर यहाँ एरर आ रही है क्यों? क्योंकि that is letter date. So month, days और year में चाहिए तो is equal to date diff, this comma this comma y. अब y तो सबका 0 ही आना चाहिए है ना. अब सपोज करो शिफ्ट डेट मेरी 2 साल बाद की है. ये देखो 2 साल आ गया कि. Is it clear? Is it clear? है ना. अब मुझे चाहिए कि 2 साल के बाद कितने महीने हुए हैं. तो ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ मैं ना 2 साल के बाद 24 महीने हो गए. 2 साल के बाद कितने महीने हो गए. फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं फिर दूसरी डेट्स लेती हूँ है ना. ऐसे करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कुछ हम डेट ऑफ बर्थ बना लेते हैं. ओके, DOB इज इक्वल टू रैंड बिटवीन. अभी समझाया था कि कैसे डेट्स लेते हैं, रैंडम डेट्स है ना. 3000 45 और इसको डेट्स पे शिफ्ट कर दो. कंट्रोल C अल्टर कंट्रोल V ताकि डेट्स बार बार चेंज ना हो. अब मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेना है. अब समझिए, इज इक्वल टू डेट डिफ. दिस इज अर्ली डेट, लेटर डेट ये आ जाएगी आज की डेट, कॉमा डी. ये क्या आ गए? टोटल डेज आ गए है ना. ये क्या आ गए? टोटल डेज आ गए. ये डेज में डिफरेंस आ गया. ये मंथ में ले लेते हैं, यहाँ पे ईयर्स में ले लेते हैं और फिर एक्चुअल भी ले लेंगे है ना. अब इज इक्वल टू डेट डिफ DOB कॉमा टुडे. टुडे से अपने आप करंट डेट आ जाएगी. देन मान ये महीने में डिफरेंस आ गया. देन ईयर्स ले लीजिए, इज इक्वल टू डेट डिफ अर्ली डेट कॉमा लेटर डेट कॉमा ईयर. बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. देन आई एम गोइंग अहेड. हाँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. टेल मी, बिकॉज आई वांट कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका एडवांटेज लो. बताओ, क्या ये तीनों समझ में आया? करिए साथ साथ में प्लीज.
Okay. Now I want exact month. 3 साल के बाद कितने महीने हो गए? Exact months. So is equal to date diff है ना, सिंगल डिफ है, सिंगल एफ है, कॉमा टुडे कॉमा एमडी. कितने महीने हो गए? 4 महीने. 3 साल 4 महीने हो गए. अब एग्जैक्ट डेज ले लो. इज इक्वल टू डेट डिफ अर्ली डेट कॉमा टुडे कॉमा MD. Actually, here should be the YM. See, 3 साल 3 महीने 4 दिन हो गए, है ना. डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अप्रैल 22. कितने साल का हो गया? 3 साल 3 महीने 4 दिन. इज इट क्लियर? So how many format it supports? कितने फॉर्मेट होते हैं देख लो. D M Y then YM then MD. D for days, M for months, Y for years, then YM for exact month and exact days. फटाफट करिए, फास्ट. Do please. Anybody have some query? कुछ क्वेरी है क्या? No, Excel will not show the date diff function, but it is included in the library. Excel, in a Excel, date diff function will not show, but it is included in the library. You can, आप अपने हिसाब से लिखिए, ये काम करेगा. सी देखो यहाँ पे ये इज इक्वल टू जैसे ही लिखते हैं डेट डिफ, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. इट इज नॉट शोइंग मी ना, ये दिखाता तो है नहीं ना, पर अब दिखा रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ बग्स की वजह से इसको लाइब्रेरी में इंक्लूड नहीं किया गया. प्लीज डू इट फास्ट. कंप्लीटेड. Complete. Should I move for the next? Jyotirmay, Nitin, please reply fast. Chandrasekhar.
Reply fast so that I can move ahead. Okay. Thank you. Thank you so much. Fine. Now एक साथ सब कर लेते हैं ना, सारा डिफरेंस एक साथ निकाल लेते हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे देखें. एग्जैक्ट डिफरेंस. So how can we take the difference in a single cell is equal to date diff, then early date, later date, comma, format. First should be the year. Okay, and then type here the year by RS. Okay, then end. Again use the end operator. Then again use the date diff, then early date, later date, comma, M. Then end months. Then end. Again end, date diff, early date, comma, later date, comma, D. It should be the YM, right? YM, and here should be the MD. And days. See, 3 years, 3 months, 4 days. Just check. In a single cell using the AND operator, and we already understood what is the AND operator. Okay, we already understood the AND operator.
Is it? Shall I move ahead? Shall I? Chandrasekhar, do one thing. Just copy your formula and paste here. Copy your formula and paste here. Then I'll give you the understanding. Okay. Copy your formula and paste here. 3.4 years. No. Not possible. Manually, you have to enter the. Okay, I'm giving you the example. Okay. I'm giving you 3.4 Jyotirmay. See, for that is equal to date diff. First, you have to take the difference in a year. Okay, then end dot. Then end. Directly, it's not possible, but you can do like that. Then comma ym. See, 3.3, 3.9. And then you can write here the years and IRS. Excel is a magic, you know. Whatever you want, you can do. Whatever you want, you can do. Okay. Jyotirmay, clear? Chandrasekhar, copy your formula which is giving you the name error. Jyotirmay, is it clear how I have taken the 3.4 years? 3.3, 6.9, 15.3. Completed. Is it complete? So date diff function is completed, right? Day, month, today, now, year, date diff. Now some more important functions. You know, sometimes you want कौन से week का कौन सा week है ना? Then you can use week num date. So how? See, week num is equal to week num 16th week. 16th week of a year, huh? 16th week of a year. Okay. Now next. Then net working days. This is very important, you know. Early date. मतलब आप क्या दे दो? Date of joining दे दो. Date of TOJ you can say. TOJ. या अर्ली डेट दे दो. चलो ठीक है. जो भी इसमें दिया है एक्सेल में वो अर्ली डेट का बोलते हैं उसको. Then letter date.
Okay, early date, then later date. Later date. Okay, then holiday list. Holiday list. कितने दिन की छुट्टी थी? जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, 1 जनवरी 2025, टोटल डेज कितने होंगे आज तक के? इज इक्वल टू टुडे माइनस दिस। ये कंप्लीट आपके क्या आ गए? ये टोटल डेज आ गए 198। बट मुझे वर्किंग डेज देखने, वर्किंग डेज मीन सैटरडे संडे छोड़ के, है ना? सो इज इक्वल टू नेट वर्किंग डेज, नेटवर्क डेज, दिस कॉमा टुडे। अभी मैं हॉलीडे नहीं ले रही हूँ, राइट? कितने दिन है? 143। मतलब इसका और इसका डिफरेंस क्या है? 198 माइनस 143, दैट इज सैटरडे संडे ना, सैटरडे संडे। एंड सपोज वी हैव द हॉलीडेज, जैसे मेरे पास छुट्टी है 26 जनवरी, राइट? देन 14 फरवरी, एंड देन मार्च, 20 मार्च होली थी, ये मान ले, ठीक है? 13 मार्च को होली। 13 मार्च 2025। अप्रैल में कोई छुट्टी नहीं थी, मई में नहीं थी, जून में भी नहीं, है ना? जुलाई में सपोज जो कंपनीज की एनिवर्सरी, ये मान लीजिए, राइट? ओके, दीज आर द सम हॉलीडे लिस्ट। सो हाउ, कॉमा, अभी कितने दिन आ रहे वर्किंग डेज, है ना? अब मैं ले लेती हूँ वर्किंग डेज विथ हॉलीडे लिस्ट। है ना? इज इक्वल टू नेट वर्क डेज, दिस कॉमा टुडे, कॉमा दिस इज माय हॉलीडे लिस्ट। क्या आएगा बताओ? 143 माइनस 4 139 आ रहा है क्या? 140 आ रहा है, क्यों? बिकॉज वन ऑफ द डे हैव द सैटरडे और संडे, इनमें से कोई भी जो एक दिन होगा उस दिन सैटरडे संडे होगा। जैसे आप यहां से देख लीजिए, कैलेंडर इज देयर। जनवरी वॉज द संडे, तो दैट्स वाई वो तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड था ना, संडे तो वैसे ही छुट्टी थी हमारी। इज इट क्लियर? नेटवर्क डेज, सैटरडे संडे छोड़ के आपको बाकी बताएगा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?
Okay, Jyotirmay, I got the question. I'll giving you the answer. Okay. Okay. See, the first question is, in case in a working days, उनके कुछ हॉलीडे लिस्ट है जिसमें उन्होंने क्या किया है, पेड लीव्स लिए, तो वो तो आपको प्लस करनी पड़ेगी, राइट। बट हाँ, नेक्स्ट जो है सैटरडे संडे, उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। द क्वेश्चन इज, प्लीज लिसन ऑल स्टूडेंट्स केयरफुली। In case your company system is only Saturday, Sunday is a holiday, then there is a next function, that is network days initialized. Then today, comma, only Sunday is a holiday. Only Sunday is a holiday. So just take this one. No holiday list I am giving you. अब पहले क्या आया था, वर्किंग डेज कितने आए थे, 143, नाउ 171, क्योंकि उतने सैटरडे होंगे ना, उतने संडे होंगे ना। 198 माइनस 171 संडेज होंगे, और 171 माइनस 143 सैटरडेज आ जाएंगे। इज इट? टोटल सैटरडे कैसे निकालेंगे बताइए, टोटल संडेज कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये तो हो गए टोटल संडे। अब टोटल सैटरडेज कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू, ये तो क्या है आपके, ये आपके सैटरडे संडे छोड़ के आया था, ये आपका संडे छोड़ के आया था, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो सैटरडेज आ जाएंगे ना। और वर्किंग डेज प्लस टोटल संडेज प्लस टोटल सैटरडेज मिला के क्या आ जाएगा, टोटल डेज आ जाएंगे। इस तरह की कैलकुलेशंस होती है, हमें करनी पड़ती है कई बार। इज इट क्लियर? कैसे करी ये समझ में आया? संडे हॉलीडे, अब ऐसे ही सैटरडे हॉलीडे भी निकाल सकते हो। तो सैटरडे हॉलीडे वाले दिन कितने आने चाहिए, 198 माइनस 28, देखो आ जाएगा आपका सैटरडे हॉलीडे is equal to net working days initialized, this comma this minus comma सैटरडे हॉलीडे है आपका, तो यहाँ नीचे दिया है ना आपको ऑप्शन, कितने आया, 171। वन 198 और माइनस 28, इज इट? ज्योतिर्मय, आई थिंक सो कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड। There is no specific Saturday. See, in that case, you have to, Jyotirmay, in hotel industries, in that case, you have to, first you have to take the days difference. फिर एक हॉलीडे लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसको माइनस कर दोगे आप, दैट्स इट। देयर इज नो स्पेसिफिक फंक्शन ना, ये तो स्पेसिफिक केस में होता है। तो स्पेसिफिक केस के फंक्शंस तो के लिए तो यू हैव टू डू गो फॉर द ईआरपी सॉफ्टवेयर, उसके लिए तो आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए ना। यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, फिर उसके लिए आपको कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी, एक्सेल में समझना पड़ेगा कि कैसे होगा। इज इट क्लियर? आई एम श्योर ज्योतिर्मय यू गॉट द थिंग्स, बिकॉज योर क्वेश्चंस इज वेरी अप टू द मार्क।
Any question regarding that? ज्योतिर्मय कोई क्वेश्चन है क्या? Otherwise I am moving ahead. हाँ. No? Okay. Next. Again, this is a very important function. You know, sometimes क्या होता है? Okay, let me like type here the name. That is EO month. है ना? इसका मतलब क्या होता है? End of the month. Then date. Comma month. अब क्या होता है? आज से 4 महीने बाद आखिरी डेट कौन सी आएगी मुझे पता करना है. आज से 4 महीने बाद आखिरी डेट कौन सी आएगी ये पता करना है. So I can use this function. Sometimes you know जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना तब इस तरह का काम आता है हमारे पास. जैसे हमने ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट डेज है ना. आप ये मानिए I should copy it in a next sheet. These are my contract days. ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट के डेज है. इस दिन मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है. Now I want after 4 month. अब ये यहाँ पे मेंशन है. ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 5 महीने का है, ये 14 महीने का है, ये 16 महीने का है, ये 30 महीने का है, ये 25 महीने का है. अब मुझे चाहिए आखिरी दिन क्या आएगा, एंड डेट क्या होगी, महीने की आखिरी दिन क्या आएगी. तो इज इक्वल टू ईओ मंथ. बहुत काम आता है. स्टार्ट डेट फिर 3 महीने बाद की आखिरी डेट दे देगा. इसको डेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा. देखो 2 महीने बाद आखिरी डेट कौन सी होगी, 31 दिसंबर. इसकी महीने की आखिरी डेट. हाँ, सेम डेट नहीं देगा, महीने की आखिरी डेट. फिर 5 महीने बाद आखिरी डेट कौन सी होगी, 30 सितंबर. मई उस महीने की आखिरी डेट होगी. 14 महीने के बाद उस महीने की आखिरी डेट क्या आएगी, 31 जनवरी. 16 महीने के बाद उस महीने की आखिरी डेट 29 फरवरी. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन check. Is it EO month? End of the month. EO month stands, EO stands end of the month. So month last date, okay? Last date of the month. The next function is a very similar function, that is E date. Exact date. After 4 months, I want exact date. Then E date, this, comma, just assume
14th July 22. 14th July 22. See, after 14th month, 28th January 2011. 2nd February 20, 25th March, 26th September. Is it? Is it clear? How do you shift date? See, okay, no issue. Okay, see, when you this is number by default, it is giving you the number. Okay, now either you can shift from here dates. You can shift the format date. No long date, it should be short date. Or there is a one shortcut key, that is Control Shift hash. Control Shift hash. See, CTRL plus Shift plus hash. Or 3, you can press 3. Same thing is there. Control Shift 3. Presently it is in number, then Control Shift 3. That is in date. It will be converted into the date. These are some shortcut keys, okay? I used that keys. Usually I used that keys. I'll give you the all understanding, no issue. Okay. Completed? Is it completed? Answer me, please. Okay. Thank you so much. So almost the month, a date category function is finished, but one more function is there. We cannot say it is the date category function. It falls under text category.
You know, sometimes I want on this date, on this particular date, which day will be there. Okay, like weekday will be there. For example, suppose Sunday, Monday, Tuesday, so is equal to text. Then date, comma, format. D. 4 DD should be there. Now, Sunday will be there. Same thing I can use here now. Text, then date will be there, and then comma, D. Enter. Now, here itself you can use now, because now you learn a combination of functions. Function within a function. You already know how can we use the combination of functions. Is it clear? Text function. Use this function. This is very important function, you know. See, first you have to use like that is equal to text. Then this comma format DD. Then Thursdays. But I want end of the month which day will be there. So first you use end of the month and then use DD. Is it clear? Even you know you can use like this. After DD, put a space, then write here the MMM. See, Sunday, July. Monday, December.
Should I move for the next? Okay. So now next. Next is we completed the date category. Okay. We completed the date category. If somebody finds कि आपको कुछ और भी समझना है कि मैम ये डेट्स कैसे आएंगी, तो वो आप कर सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल सपोज समटाइम्स यू नो क्या होता है कि ओके कि जो ई डेट है ना उसके एक दिन पहले वो आपको बता दे तो आप -1 कर सकते हो. मतलब दीज आर द लाइक, ये तो मैनिपुलेशंस होते हैं. ये और करते करते हम देख लेंगे कि ये कैसे कब कहाँ पे काम आते हैं. विल गिव यू द एग्जैक्ट एग्जांपल फॉर दैट. Okay. So almost we completed the date category. Now very important functions. अब देखो कुछ फंक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फिल्टर करने के काम आते हैं ना. फिल्टर का मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन गिव मी द आंसर लाइक व्हाट इज अ फिल्टर एग्जैक्टली? फिल्टर क्या होता है बता सकते हो क्या? आई थिंक सो. आप पहले बताइए, देन आई विल टेल यू. जस्ट प्लीज आंसर मी, व्हाट इज अ फिल्टर? व्हाट डू यू मीन बाय द फिल्टर? प्लीज आंसर मी, व्हाट इज फिल्टर? Okay, so filter means on the basis of condition we want the, मेरी कुछ कंडीशन है उस बेस पे मुझे रिजल्ट चाहिए. सो वो फिल्टर होते हैं. ऐसे फिल्टर बेस्ड कुछ फंक्शंस होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंप्लीट सेल, बट आई वांट टू क्रिएट द सेम समरी हियर, सेम समरी हियर, बट अगेन माय कंडीशन इज देयर, है ना. मुझे ये नहीं चाहिए, तो मेरी कंडीशन है कुछ. नाउ व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज कि मुझे वही सेल चाहिए जो ग्रेटर देन 5000 है. उन्हीं सेल्स का टोटल चाहिए जो ग्रेटर देन 5000 है. सो देयर इज अ वन फंक्शन विच इज नोन एज सम इफ, ये भी हो गया हमारा फंक्शन सम इफ, है ना. सबसे पहले क्राइट एरिया रेंज, देन क्राइटेरिया. क्राइटेरिया प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये टेक्निकल वर्ड है, बट क्राइटेरिया मींस कंडीशन. देन सम रेंज, और रेंज का मतलब समझते हैं सब, कहां से कहां तक. सो सम इफ फंक्शन एड्स द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू सम इफ. अब मेरी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 5000 होनी चाहिए सेल्स. तो ये चेक कहां से होगा? इसको क्राइटेरिया बोलते हैं. कंडीशन नोन एज अ क्राइटेरिया. ये चेक कहां से होगा? ये चेक करने के लिए उसको पूरी सेल्स चाहिए ना.
देन दिस इज कंडीशन। फिर उसको क्या चाहिए, टोटल रेंज चाहिए। सम कहां से करेगा, यहीं से ही करेगा ना इस बार तो। अब ये जो टोटल है ये क्या है, ये टोटल और इस टोटल में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये 5000 से ऊपर वाली टोटल है, ये 5000 से ऊपर वाली टोटल है। इज इट सम इफ it adds the value on the basis of condition. Yeah, some data we required as per the our condition. Okay, when the condition fulfilled, then only the data should be there. So sum if means it adds the value on the basis of condition. Anybody have some problem, please? हो गया? Should I move for the next? Sum if. Yes, Banu, correct. Please mention yes or no. You completed it? Nitin? Am I audible now? Please, anybody answer me. Okay. So, Divyanshi, is it completed? Sum if?
Shall I move ahead? Okay. Now, same thing you can use, same function, just copied it. है ना, इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो. And you can use in a average if. नाम दे देते हैं average if is equal to average if. See. Then count if. Now count if. अब count if में ना सम रेंज देने की जरूरत नहीं रहती है. ओनली 2 आर्ग्यूमेंट्स आर देयर. काउंट इफ, ये लास्ट वाला रेंज नहीं देना है. सम रेंज देने की जरूरत नहीं है बिकॉज काउंट है ना. कितने हैं? 44. 44 ऐसे हैं जो 5000 से ऊपर सेल है. तो ये दिस डिवाइडेड बाय 44 7341 आएगा ना. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट. अब मेरी कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है ना, आप समझिएगा. नाउ आई हैव द कंडीशन. अब मेरी जो कंडीशन है ना वो चेंज हो गई. अब मेरी कंडीशन क्या है कि जो आपका जो क्वांटिटी है. अब कंडीशन नहीं मेरी एसेसरीज में से आ गई. ओके ठीक है. कंडीशन क्या है कि फोन्स होना चाहिए. फोन की सेल देखनी है. तो यहाँ क्या देखना पड़ेगा? फोन्स, है ना. अब मैं जब फोन्स लूंगी तो क्राइटेरिया रेंज मेरी क्या होगी बता सकते हो? अब मुझे फोन कहाँ से चेक करना पड़ेगा? ये इसमें से चेक करना पड़ेगा ना, एसेसरीज में से. ये सब कैटेगरी में से. देन कॉमा, ये कंडीशन है. अब सम रेंज क्या होगी? वही सेल्स वाली. तो ये फोन की सेल्स आ जाएगी ना. ये देखो, ये फोन की सेल आ गई ना. ये फोन की सेल आ गई क्योंकि मैंने अब क्या किया, कंडीशन रेंज, कंडीशन चेक कहां से होगी? क्यू में से. क्यू क्या है? सब कैटेगरी है जिसमें से वो चेक करेगा कि फोन है कि नहीं. अब मैंने सपोज करो फोन की जगह कुछ और दे दिया. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चेयर्स है ना, तो मैं चेयर्स दे देती हूँ यहाँ पे. तो मेरा ये चेंज हो जाएगा ना. ये देखो, ये जो है ये फंक्शन को नीचे ले लेती हूँ. अब चेयर्स की सेल ये हो गई, ये फोन की सेल हो गई. दिस इज चेयर सेल, दिस इज फोन सेल. और ले लेती हूँ चलिए. फॉर एग्जाम्पल एसेसरीज. ओके, बाइंडर भी ले लेते हैं, टेबल्स भी ले लेते हैं और कॉपियर भी ले लेते हैं. और इसी फंक्शन को नीचे तक ले लो. ये देखो, इसकी सेल, इसकी सेल, इसकी सेल अलग अलग आ गई ना सबकी सेल. But make sure you understood कि criteria range should be that range from where you want to check the condition. Criteria range should be that range from where you want to check the condition.
Clear? हो गया मैम. I missed the previous classes. Okay. For that I cannot do something ना. मैं कुछ नहीं कर सकती. I'm not able to do something. You should ask to the institute, like they will send you soon the link, but I'm not sure when. So you have to join the live classes now, because see, your institute plan for you live classes. So you should join the live classes so that you can directly ask the questions. Is it sum if and average if? I'm sure like sum if, average if and count if. We completed 3 functions. Sum if, average if, and same arguments. Criteria range, criteria, comma, एवरेज रेंज, जहां से एवरेज निकालना है. नेक्स्ट इज काउंट इफ, ओनली क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया, नो सम रेंज शुड बी देयर. Is it? Next, if we have the multiple condition, then some ifs. Some ifs. The first is a sum range, then criteria range 1, comma, criteria 1, comma, criteria range 2, comma, criteria 2, and so on. So some ifs. Okay. For example, suppose I have 2 condition. Okay, I have 2 condition. I want the sales should be greater than 5,000 and the category should be phones. Then is equal to sum ifs. The first is a sum range. कहाँ से total करनी है? Sales वाली range तो पहले ही ले लो, है ना. नंबर ऑफ सेल्स सेम होने चाहिए. S1 से ले रहे हो तो आपको नेक्स्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ क्राइटेरिया, पहली कंडीशन क्या है? सेम ही, सेल्स में से ही कंडीशन लगेगी. This is my first condition. The second condition, which should be from subcategory. This is my second condition. See, greater than 5,000 और phones. टोटल कितनी थी फोन की सेल? इतनी. और ग्रेटर देन 5,000 कितनी है? 73862.9. Do it. Okay. Just take the screenshot, do it yourself. Tomorrow we will again talk. हम इसकी डिस्कस करेंगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो, राइट? I'll send you one exam question of conditional like formulas जितने भी करवाए हैं. So tomorrow is your off. So do it yourself. Saturday, Sunday में कर लेना. Then Monday we will discuss. Okay. Take the screenshot fast. So thank you so much. Thanks a lot. Bye and take care. Okay, bye.